Hello everyone, we are starting chapter 7, that is things around us. There are so many things that are present around us. Some are natural and some are man-made, as animals, plants, birds, chair, table, fan and many more. As here the given picture shows, there is elephant, giraffe, squirrel, human being, cow, mountains, rocks and so many more. So now how can we find that these are living or non-living? Let us discuss about that. Now, things are of two types, natural things and man-made things. Natural things are the things that are obtained from nature, and man-made things are the things that men have made. The natural things may or may not be living things, like plants, animals and birds. They are living things but natural. Mountains, sun, moon, mineral, rocks and many more. These are the things that we have get from nature, but these comes under non-living things. And man-made things such as table, chair, fan, board and many more are the non-living things. Now how can we difference between living things and non-living things? Living things have life in them, but non-living things have no life in them. Living things need air, food and water for their survival, and they can change their own according to the surrounding, but living thing cannot need change their own. We have to change by yourself according to our needs. So the things that are created by nature may or may not be living things, but all the things that are man-made, that are non-living things. Now in this chapter we will discuss about the characteristics of living things. As we see several things such as plants, animals, insects, chair, book and people around us. Are all these living things? No, because some are living and some are non-living. As human beings, animals, plants are living things. Now we will discuss some characteristics that make different from non-living things. Let us discuss the characteristics of living things. First one is structural organization. Living things have definite structure of their body. Now first one is cell, then tissue, then organ system, then organism. The body of living organisms is made up of cell. And what is cell? Cell is the smallest basic unit of life. सेल सबसे छोटी यूनिट है हमारी बॉडी में जो हमारी लाइफ को प्रोसीड करती है. नेक्स्ट इज टिश्यू. व्हेन टू और मोर सेल, जब बहुत सारी सेल इकट्ठी हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं? टिश्यू फॉर्म करती हैं. सेल सिर्फ इंडिपेंडेंटली फंक्शन वर्कआउट करती है, बट टिश्यू हैव अ पर्टिकुलर फंक्शन in our body. Next, when tissue combine, they will form an organ. And each organ in our body have a particular function. Next is when organ combine, they will form organ system. And when organ system work together, they will form an organism or human body. Now we will discuss all these one by one. Cell is the smallest basic unit of life that have टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली. सेल किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, सिर्फ अपने ऊपर काम करता है. और वो क्या करता है? हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है जिससे हमारी लाइफ मूव ऑन करती है. नेक्स्ट इज टिश्यू. जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो सेल कैसे होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए, तो वो क्या बन जाते हैं? टिश्यू बन जाते हैं. दैट हैव अ पर्टिकुलर फंक्शन. नेक्स्ट, व्हेन टिश्यूज कंबाइन दे विल फॉर्म organ. एंड व्हेन organ combine, they will form organ system. After then organism. Now when all this complete system, this is a structural organization of living things. As our body is made up of cell, then tissue, then organ system, then organism. There are two types of cell. First one is multicellular cell, second one is unicellular cell. Multi means many, cellular means cells.
The organisms that are made up of many cells that are called multicellular organisms, and the organisms that are made up of only one cell, unicellular, here uni means one, cellular means cell, that are made up of only one cell, that are unicellular, and that are made up of many cells, that are multicellular organisms. Example is human being. As we have so many cells in our body, so we are multicellular organism. Now this is our life process. And what is life process? The process that helps organism to stay alive. वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म जीवित रहने के लिए हेल्प लेता है, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक इज मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. एक्सेप्ट प्लांट्स को छोड़कर ऑल द अदर लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ ईदर फूड, शेल्टर और सेफ्टी. प्लांट्स को छोड़कर चाहे वो एनिमल हो या फिर बर्ड हो, वो क्या करते हैं, अपने प्लेस से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर और सेफ्टी. प्लांट्स मूव नहीं कर सकते. प्लांट ओनली मूव देयर पार्ट्स एज लीव, स्टेम और रूट्स. एंड प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. प्लांट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्यों नहीं पर मूव कर पाते? बिकॉज दे आर फिक्स्ड इनटू द सॉयल. वो सॉयल में फिक्स होते हैं. और सॉयल क्या करती है? प्लांट्स को वाटर और मिनरल प्रोवाइड करती है ताकि वो ग्रो कर सकें, सच एज देयर पार्ट्स, लीव्स, स्टेम एंड रूट्स. Next is response to stimuli. Now what is stimulus? A change in the environment of an organism due to which change occurs in the activity of an organism. जब किसी organism के environment में change होता है और उस environment की change की वजह से वो organism अपनी activity में change कर लेता है, that is called stimulus. As प्लांट्स क्या करते हैं? अपने आप को तो मूव नहीं कर पाते, बट प्लांट्स क्या करते हैं? अपने पार्ट को मूव करते हैं, लीव्स, स्टेम और रूट्स. दैट इज स्टिमुलस. रिस्पॉन्स इज एन ऑर्गेनिज्म रिएक्शन टू अ चेंज इन द सराउंडिंग. वो ऑर्गेनिज्म जो रिएक्शन देता है सराउंडिंग में चेंज होने की वजह से, दैट इज कॉल्ड इट्स रिस्पॉन्स. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ प्लांट दैट इज टच मी नॉट प्लांट. व्हेन वी टच इट, जब हम उसको लीव्स को टच करते हैं तो वो क्या करता है? वो अपने लीव्स को कर्ल अप कर देता है. Curl up here is showing the response of the plant leaves, and touch is the stimulus. We are giving the action to it. All the living organisms, either plants, animals, respond in some way or other way to the stimuli. Next is growth. Living things also grow. An organism grows when it consumes food. हम ग्रो कब करते हैं? जब हम फूड खाते हैं. और फूड हम किस लिए खाते हैं? टू गेट एनर्जी. इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ अकर्स इन डिफरेंट स्टेजेस. एज अ बेबी ग्रोज इनटू एन अडल्ट, अ सीडलिंग ग्रोज इनटू अ प्लांट. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स ग्रो फ्रॉम एन इन्फेंट टू एन अडल्ट स्टेज. ह्यूमन क्या करते हैं? बेबी से किस में? अडल्ट स्टेज में आते हैं. नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स नीड फूड. ऑल द लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ. उनको किस लिए चाहिए फूड? सर्वाइवल और ग्रोथ करने के लिए. फूड हेल्प्स बॉडी टू ग्रो एंड प्रोवाइड एनर्जी. फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़. प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग सनलाइट, and that process is called photosynthesis. Here photo means sun, synthesis means to prepare, means the process in which green plants prepare their food using sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll. This process is called photosynthesis. Now plants are called autotrophs. Auto means self. Why plants are called autotrophs? Because they depend on themselves for their food. Next is heterotrophs. Heterotrophs are the or human beings that depend on other animals or plants for their food, that are called heterotrophs. As सिप क्या करती है? वो क्या करती है? ग्रास खाती है. तो वो किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है उसके फूड के लिए, दैट इज हेटेरोट्रॉप्स. नेक्स्ट इज रिस्पायर. वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड. हम ऑक्सीजन किससे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट्स को देते हैं. तो जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी बॉडी में एंटर करती है जब हम ब्रीद इन करते हैं, ठीक है. एंड प्लांट ब्रीद थ्रू टाइनी पोर्स दैट आर कॉल्ड स्टोमेटा. सो वी